हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम +2 क्लास के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 4 इज़ गोइंग ऑन बेटा, डिटर्मिनेंट्स। इन द डिटर्मिनेंट्स लेक्चर 9 ओवर, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 10, ओके, on this chapter determinants. Now exercise in NCERT book and every other definitions and the types and everything explained up to here. Exercise 4.4 NCERT book, question number 12 to 15 we have to do. Up to 12, up to 11 has been done. Okay, so today question number 12. Okay beta, in this what we are learning in this exercise, I am repeating that adjoint and inverse of the square matrix or cube matrix, means that square matrix we can say any 2 by 2 or 3 by 3. Okay, now we have done. Now today is 12th question, but here product also is there. Verify करना है यहाँ पर. Let A equal to this 3725 and B equal to 6879. It is question number 12 in NCERT book. ठीक है बेटा. तो now what we have to verify? AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse. This we have to verify. So solution, A into B we have to find first. Okay, A into B. First we have to find this. A is 3, 7, 2, 5 and B is 6, 8, 7, 9. This product also recall your memory. I told first row with first column, first element, first row with second column, second element, corresponding elements product sum. Then that will come, you know, then 3 into 6. Okay, first row with first column, multiply and add. 3 6 ja 18, 7 7 ja 49, 18 plus 49. Okay beta, 49 and 1 50, 50 and 17 67. First element 67. First row with first column, corresponding element and sum. First row with second column and corresponding element sum. 3 8 ja 24, 7 9 ja 63. 63 plus 24, 60, 20, 80, 3 and 4 7, 87. Okay, it is 87. After that, second row with first column, corresponding element product sum. 2 6 ja 12, 5 7 ja 35, 35 plus 12, 35 and 12, 47. 35 plus 12, 47. Then second row with second column. Then 2 8 ja 16 plus 5 9 ja 45. So 45 plus 16, 45 and 10, 55 and 6, 61. Okay, this is the product of these both. Done. Now LHS AB whole inverse. Now LHS AB whole inverse is equal to AB आपका 67, 87, 47,
61. This is AB and then inverse of this. So inverse of this will be equal to adjoint of this, ठीक है बेटा, and divide by magnitude of this. So means determinant of this we should find. Formula will be this: inverse is equal to 1 upon determinant of this, ठीक है बेटा, determinant of AB, ठीक है, and into adjoint of this AB, ठीक है बेटा. Now determinant of AB calculate. Okay, determinant of AB is equal, first understand, first row के along मैं expand कर रहा हूँ, तो 67 into 61. Okay, value of the determinant of the 67 into 61, 67 into 61 फाइंड करो. 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 6 7 जा 42, 42 and 6 48, 48 4 कैरी, 6 6 जा 12, नहीं 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 and 4 carry 40. Again 1 7 जा 7, 1 6 जा 6 plus 7 6 जा 42, 42 plus 6 48, 4 carry 6 6 जा 36 plus 4 40, 40 87. Okay, this is the 40 87. Minus this product 87 and 47, 7 7 जा 49, 4 कैरी, ठीक है बेटा, 7 8 जा 56, 7 4 जा 42, नहीं 7 8 जा 56 प्लस 7 4 जा 28, 56 plus 28, 56 and plus 28, 84 plus 4, then 88, 88 का 8, then carry 8, then 4 8 जा 32, 32 plus 8 40, 40 89. This, then value of this is minus 2, 40 89 negative, 40 89 87 positive, so negative 2 is the value of determinant of AB. Okay, now after that what you have to require here? Adjoint. Adjoint means cofactors, matrix transpose. So adjoint I am writing here, solution forward 1 upon determinant means minus 2 and then cofactor matrix and transpose, cofactor matrix of this and transpose of that, ठीक है. तो 67 का cofactor 61, 87 का cofactor minus 47, so this is the cofactor of first row, the writing are in first column 47. Now second row का cofactor 47 का cofactor it is 2 1, then negative 87, and 61 का cofactor 61 along this cancel row and column, then 67. This
दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। देन सिंप्लीफाई, देन -2 से डिवाइड, 61 अपॉन -2 -61 अपॉन 2, 87 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, देन 87 upon 2, then -47 divided by -2, then 47 by 2, then 67 by 2 -67. This is LHS. Now find RHS. RHS is B inverse. First B inverse. What is B? B this. So B inverse into A inverse. So first B inverse. B inverse means 1 upon determinant of B into cofactor of B and transpose of that. Cofactor of 6, 9. Cofactor of 8, -7, transpose also I am doing. First row but writing first column. Second row के cofactor, second column I will write. तो 7 का cofactor -8 and 9 का cofactor 6. Done. This is adjoint of B. Adjoint of B, यानी this is the B inverse whole and into A inverse. A inverse 1 upon determinant of A into cofactors matrix transpose, यानी adjoint of A. A is this. Then cofactor of 3 is 5. Cofactor of 7 is -2. Right? फर्स्ट कॉलम बिकॉज फर्स्ट रो के कोफैक्टर, फर्स्ट कॉलम बिकॉज ट्रांसपोज, एंड देन 2 का कोफैक्टर -7 एंड 5 का कोफैक्टर 3. दिस इज द A inverse. नाउ सिंप्लीफाई. हाउ? डिटर्मिनेंट फाइंड करो A का. डिटर्मिनेंट ए एंड डिटर्मिनेंट बी यहाँ फाइंड कर लो. डिटर्मिनेंट ए भी फाइंड कर लो, डिटर्मिनेंट बी भी फाइंड कर लो, ठीक है. डिटर्मिनेंट बी क्या होगा? डिटर्मिनेंट बी देखो, 6 इंटू कोफैक्टर ऑफ 6, 9. 6 9 जा 6 9 जा 54. ओके. एंड माइनस, expand it, -8 into 7, 56. Then -2. और A 3 into 5, 15. माइनस को फैक्टर होगा इसका, -2 into 7, -14. then equal to minus plus 1 equal to plus 1. So then put here these. So this implies 1 upon determinant B. Determinant B is -2. So 1 upon -2 9 -7 -8 6. This into 1 upon determinant A is 1 as it is, यानी कि 5 -7 -2 and 3. This implies product. ओके बेटा, तो -2 से डिवाइड किया, क्या बना? -9/2
पहले लिख लें, फिर प्रोडक्ट -9/2, ठीक है, माइनस 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 2 से डिवाइड -8 को 4, और -2 से डिवाइड -7, देन 7/2, एंड 6 को डिवाइड -2 से -3, एंड इनटू 5 -7 and -2 and 3. तो प्रोडक्ट ऑफ दीज नाउ आई एम डूइंग हेयर अपवर्ड, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। नाउ इट विल कम RHS is going on this now product first row with first column corresponding element product sum -2/5 into 5, okay beta, and sum with product 4 into -2 -8, तो -45/2, 9 5 जा 45, -45/2 -8, -45/2 -8. This is first element of the product, okay. This multiply with this, okay. Now first row with first column, second column sorry, तो -2 into -7 plus 63/2 and 4 into 3 12 plus 12, 63/2 and plus 12, okay. Again check this into this, हाँ 9 7 जा 63/2 and plus 4 3 जा 12, okay. Now second row this with first column, 7 5 जा 35/2, 35/2 in -3 into -2 plus 6, and last element with second column, second row with second column, 7/2 -7 -49/2, -49/2 and -3 into 3 -9. Now solve it. LCM 2 -45 -16, -45 -16, okay. 45 and 16 61, okay. -61/2, सेकेंड एलिमेंट सॉल्व करो अपॉन 1 करके एल्शियम लेकर, 2 एल्शियम, 12 2 जाओ 24, 63 plus 24, 63 plus 24 87, ओके बेटा। क्लियर, 87/2, ओके, 87/2। Now this 35/2 plus 6, LCM 2, then 35 plus 6 2 is 12, 35 plus 12, 47, 47/2, this, now both are negative,
then LCM 2, then 2 9 is 18, 49 and 18, minus 49 minus 18, तो minus 50 and minus 17, minus 67 by 2. So this equation, this is 2. So from first and second you check, minus 61 upon 2, 87 upon 2, 47 upon 2 and minus 67 upon 2, both are equal in equation 1 and 2, यानी LHS equal to RHS. Okay, LHS in equation 1, RHS in equation 2. Then from both we can say here, okay, from 1 and 2, this implies LHS equal RHS, hence verified. ठीक है बेटा, hence verified. This we should write. Done. Now next question. Next question is question number 13 from NCERT book. Okay beta. Now question number 13 from NCERT book. See question 13. Here calculation is there, है ना, product and that. So that's why time is consuming to explain the product everything. Now question number 13. Also here equation is there, matrix equation. Okay, that we have to find A inverse from that. Question 13 is if A, saying if matrix A is 3 1 minus 1 2, 3 1 minus 1 2, matrix A, so that A square minus 5A, so that A square minus 5A A square minus 5A plus 7I equal 0, plus 7I equal to 0. This matrix equation. Okay, क्वेश्चन 13 ये शो करना है 0 है, हैंस फाइंड ए इनवर्स, हैंस फाइंड ए इनवर्स, हैंस फाइंड इस इक्वेशन से ए इनवर्स फाइंड करना, हैंस फाइंड ए इनवर्स. ठीक है, यहाँ एडजॉइंट फॉर्मूले से नहीं करना है, ए इनवर्स कैसे, इस इक्वेशन से. पहले ये इक्वेशन शो करनी है कि ट्रू है, इक्वल टू 0 है वैल्यू, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स. ओके, नाउ सॉल्यूशन. प्रूफ वी कैन से in the proof what we can take, LHS. In LHS, A square minus 5A plus 7I. ठीक है, I क्या है बेटा, I है 1 0 0 1, we know. ठीक है, LHS now implies that A square means 3 1 into A into A, 3 1 minus 1 2 A into A, 3 1
-1 2, दिस इज a इंटू ए, ठीक है, ए स्क्वायर -5 इंटू ए इज 3 1 -1 2, ओके, दिस इज मैट्रिक्स, प्लस 7 इंटू दिस, then 7 1 जा 7 0 0 7, scalar multiply in the matrix in each element, here also in each, here product, this product we can find first row with first column corresponding product sum, 3 3 जा 9, 1 1 जा -1, 1 and -1, तो 9 -1 8, ठीक है बेटा, प्रोडक्ट फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट, तो 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 3 + 2 5, then second row with first column -1 into 3 -3 and 2 into -1 -2, -3 and -2 -5. After that with second column -1 into 1 -1, 2 into 2 4, -1 + 4, तो +3, ओके बेटा, दिस प्रोडक्ट -5 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 5 3 जा माइनस को प्लस कर दो, -5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, -5 into 3 -15, -5 into 1 -5, -5 -1 + 5, -5 into -2 -10, plus 7 0 0 7. Addition all three these, you see 8 + 8 -15 + 7, all three adding corresponding element, okay, 7 -15 + 8, तो 0 + 5 -5 and +0, then 0, -5 + 5 0 + 0 0, 3 -10 + 7 0 is equal to 0, hence equal to RHS, hence verified, hence proved. अब इसी से फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना है इससे, ए इनवर्स, ठीक है बेटा, तो इससे ए इनवर्स फाइंड करेंगे। अब इसको ट्रूथ मान लेंगे, चूंकि ये मान लेंगे नहीं ट्रूथ है, प्रूव हो गई, हैंस प्रूव्ड दिस कि दिस इज द ट्रूथ मैट्रिक्स इक्वेशन, विच वन, a² -5a + 7i इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, डन। तो अब इसमें क्या करें, मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स बोथ साइड, ठीक है, ए इनवर्स वी आर गोइंग टू फाइंड, तो ए इनवर्स से ऑपरेट कर दिया बोथ साइड, ठीक है, फुल, तो व्हाट विल कम, ए इनवर्स इंटू ए -5 into A inverse into A plus 7 A inverse into I is equal to 0 into A inverse. Okay beta, this will be 0. Now we know A inverse into A inverse into A is equal to I, ठीक है बेटा, this because
these point, and A inverse I will be A inverse. Okay, A into I is equal to A. Now put these. A inverse A is I into A minus 5. A inverse A is identity plus 7. A inverse I is A inverse is equal to 0. Then I into A is equal to A. Use these here. So then it is A minus 5I is equal to, या ये उधर ले लो, ये इधर ले लो, ठीक है बेटा. हमें इन्वर्स फाइंड करना, तो 7 इंटू A इन्वर्स विल बी इक्वल टू 5I पॉजिटिव साइड और ये पॉजिटिव नेगेटिव IA इज A दिस. ओके, आफ्टर दैट ये शिफ्ट कर दिया, नेगेटिव उधर पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव उधर से नेगेटिव हो गया, ये IA इज A. ठीक है बेटा, अब सॉल्व कर लिया. हमें A इन्वर्स फाइंड करना है, तो A इन्वर्स विल बी इक्वल टू 1/7 एंड देन होल 5I माइनस A. 5I का मतलब क्या हो गया बेटा? 5 0 0 5, ये 5I हो गया, ठीक है. माइनस A इज 3 1 माइनस 1 2, 3 1 minus 1 2 this. Okay, now A inverse equal 1/7 into, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 minus 1, 5 minus 3 2 only, and 0 minus 1 minus 1, 0 minus minus 1 plus 1, 5 minus 2, 5 minus 2 3, this. Okay, solution is this. Now equal, divide by 7, then 2/7 minus 1/7, then 1/7 and 3/7. Answer. This is your A inverse. Clear? So like this we have to solve always, and operate here A inverse in this equation, truth equation, which we have proved. Okay, done. Now next question, question number 14. Similar questions are there. Here lengthy questions, solution is lengthy, some but easy, method easy to solve. Okay, calculation only. Now question number 14. What is question 14? Question number 14. For the matrix A, for matrix A, 3 2 1 1,
3 2 1 1. For the matrix A equal to A, find the number A and B such that find the number A and B. Find the number A and B such that A square plus A such that A square plus A small a into capital A, question 14, plus BI is equal to 0. It means for the truthness of this matrix equation, find the value of A and B. Very simple. To put here solution A square, this, so A square means 3 2 1 1 into 3 2 1 1 plus A into A is 3 2, this A से multiply 3A 2A 1A A, this, okay, A plus BI plus B multiply with I, and B 0 0 B, ठीक है, this equal 0. ओके, स्केलर से मल्टीप्लाई, ए से अंदर मल्टीप्लाई हो गया ए मैट्रिक्स में, बी स्केलर से मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी 1 0 0 1 में, डन. नाउ सिंप्लीफाई प्रोडक्ट फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सम 3 3 जा 9 2 1 जा 2 9 plus 2 11. फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट 3 2 जा 6 and 2 1 ja 2, 6 plus 2 8. First row is completed. Now second row with first column 1 into 3 3, 1 into 1 1, 3 plus 1 4. Then first row with second column corresponding element product sum 1 into 2 2, 1 into 1 1, 2 plus 1 3. This plus these both 3A plus B corresponding element ऐड कर दिया 3A plus B 2A plus 0 यानी 2A A plus 0 A plus B A plus B ओके इज इक्वल टू 0. 0 का मीनिंग 2/2 मैट्रिक्स है लेफ्ट में, तो राइट में भी 2/2 होगी. ओके, ये ऐड किया, क्या बन गया 11 प्लस 3A प्लस B, 11 प्लस 3A प्लस B. फर्स्ट एलिमेंट 8 plus 2A, second element 4 plus A, 3 plus A plus B, 2
is equal to 0, 0, 0, 0. Equate the corresponding element. So this implies a plus 4 is equal to 0. A plus 4 is equal to 0. Then this implies a equal to minus 4. Value of a is minus 4. Now putting in this 3 plus a plus b equal to 0. Okay, then 3 and a value minus 4. 3 minus 4 plus b equal to 0. Then solve 3 minus 4 minus 1. तो b is equal to here minus 1 उधर जाकर plus 1 हो गया. b is 1, a is minus 4. तो आंसर value of a is equal to minus 4 and value of b is equal to 1. This answer done. Okay, so like this next question number 5 also you can do, okay, by your own. 15 also similar question as question number 13. You can do question 15. Clear? Okay, now take interest, watch and subscribe the channel, like and share and subscribe the channel and send the videos to the other contacts, जिससे कि उन्हें बहुत कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, किसी ना किसी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए. तो सभी को भेज दो, कहीं ना कहीं कोई स्टूडेंट देखेगा उसको. मेरी आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर करें, देखें और शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें. थैंक यू. ओके.